देखिए दो कानून की किताबें अच्छी जो कि मुझे आज संडे बाज़ार से मिली हैं। एक तो है हमेशा उसकी जहाँ पे भी कॉफ़ी कॉपी मिलती है मैं उठा लेता हूँ। 1000 रुपये के अंदर दो किताबें मिलनी थी, एक पुराना एडिशन है। दोनों मेरी ऑक्सफोर्ड के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्स्ट बुक्स थी। एक तो जो है लॉयड्स की जूरिस्प्रूडेंस की मोर रीसेंट वर्जन भी मिली हैं। हालत थोड़ी सी इसकी बुरी थी, लेकिन अगर आपको स्टूडेंट्स आते रहते हैं मेरे पास पढ़ने वगैरह के लिए और यहाँ पे दफ्तर इस्तेमाल करने के लिए, तो उनको दिखाने इस्तेमाल करने के लिए आई थॉट आई पिक एन एक्स्ट्रा कॉपी। दिस इज़ प्रॉबली द बेस्ट कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड कलेक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की अगर आपने किताब लेनी है जो सारी करते हैं। ये शहजाद हैदर सार्जेंट एट लॉज जूरिस कंसल्टेंट्स के अंदर नज़ीर ओल्ड बुक शॉप से मैंने उठाई। एम डी ए फ्रीमन ने इसको ऑर्गेनाइज की हुई है और इसके अंदर मुख्तलिफ एक्सट्रैक्ट और ओरिजिनल राइटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे मुख्तलिफ। एच एल ए हार्ट फॉर एग्जांपल जिसकी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है, वन ऑफ द बेसिक टेक्स्ट वगैरह जहाँ पे उसने ऑस्टिन के साथ डिबेट वगैरह किया था। बेंथम इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ लॉ, ये उस टाइम के ऊपर समझ नहीं आती थी। अब आई एक्सपेक्ट कि इसको बैठ के डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट जूरिस्प्रूडेंस, इसके अंदर फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस भी आती है मुख्तलिफ नौयत की। अगर ओ ए लेवल्स सॉरी एल एल बी एक्सटर्नल के अंदर अगर आप पढ़ें तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स। इसके साथ साथ जे एच एल ए हैरिस की आई थिंक किताब है जो कि आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। इसकी शॉर्टर वर्जन है लीगल फिलोसफीज के नाम से। वो जब ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ रहे थे तो जूरिस्प्रूडेंस के लिए हम वो यूज़ करते थे। इतनी मोटी किताब पढ़ने से बेहतर है, मगर दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक टेक्स्ट बुक्स जो कि आपको जूरिस्प्रूडेंस के लिए मिलती हैं। वकालत में कितनी यूज़फुल है आई एम नॉट श्योर, मगर आपने अगर फिलोसॉफिकल लेवल के ऊपर लॉ को एग्जामिन करना है तो दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन गेट। एक और किताब जो ऑक्सफोर्ड में हमें पढ़ाते थे टॉट के लिए, विनफील्ड एंड जॉलोविट्स की ऑन टॉट, ये वाली भी WBH रॉजर्स की। पाकिस्तान के अंदर टॉट को इतनी ज़्यादा इफेक्टिव तो है नहीं, मगर आई बिलीव कि अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल फाइंड मच मोर स्टफ इन हेयर। इसकी एक आई थिंक इससे अर्लियर एडिशन मेरा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, 500 में मिल रहा था तो ये भी उठा लिया। टॉट लेके आप पाकिस्तान के अंदर कैसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आई डू बिलीव इतनी डेवलप नहीं हुई बट डेवलप की जा सकती है। उसके लिए ये दिस इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट। अगर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है तो फिर तो डेफिनेटली अच्छी होगी, जो कि हमें पढ़ने के लिए रिकमेंड होती थी। इसके साथ साथ किताबों में एक और टेक्स्ट बुक जो कि 300 रुपये की मिली है। टेक्स्ट बुक तो नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की है, वी द पॉलिटिकल साइंस की है, वी द पीपल कंसाइज इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो प्रेसिडेंसी, आपस में चेक्स एंड बैलेंसेस, वोटिंग, पार्टिसिपेशन, सिविल लिबर्टीज़ कैसे होती हैं, उसके अंदर केसेस का भी जिक्र किया हुआ है जो कि की केसेस हैं और अच्छे अंदाज के अंदर। सैनिटी पे जाके खुल गया सफ़ा। हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स कंपेयर्स विद अदर लेजिस्लेचर्स वगैरह सारे के सारे ये थी। ये पीछे ऊपर जो हिस्ट्री की किताबें वगैरह पढ़ी हुई है US वाली, उनके अंदर ऐड करेंगे। और अब दीज आर द बुक्स जो कि आज ज़्यादातर उठाई हैं, और जो किताबें हाथ लगी हैं वो भी आई थॉट आपसे शेयर कर लूँ। छोटी मोटी हैं। एक तो आपको पहले भी जिक्र किया था, गाय डी मॉपसां या गी ड मॉपसां एक्चुअली इसको करते, शॉर्ट स्टोरीज का प्रॉब्ली बेस्ट राइटर है। उसकी ये सारी की सारी ये मेरे ख्याल में 200 रुपये वाले के अंदर, 100 रुपये या 200 रुपये वाली कलेक्शन में मिली है। अगर अंग्रेज़ी शुरू करनी है, पढ़ने में मसला पड़ रहा तो दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स यू शुड चेक आउट। अ ग्रेट बंदा जिसने ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखी है ऑल्डस के नाम से, वन ऑफ द कटिंग एज नॉवेल्स वगैरह, ऑल्डस हक्सली वॉज एन ऐसे राइटर एज वेल। और ऑलिव ट्री एंड इसको कहते हैं अदर एसेस की इसकी कलेक्शन है। और D.H. लॉरेंस के ऊपर है इसमें, वाटर वर्क्स एंड किंग्स, इन ट्यूनेशियन ओएसिस, वर्ड्स एंड बिहेवियर, लिटरेचर एंड एग्जामिनेशन। ये तो उठा तो ली है वगैरह, इसका नाम देख के ही बट पढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं। लेट अस बिगिन विद द प्रोपेगेंडिस्ट व्हाट होस्ट। लिखने का स्टाइल वगैरह, नोट देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, लोगों ने अपने नोट्स वगैरह इसके ऊपर बना के रखे हुए हैं। और पैथोलॉजिकल, एनाटोमिस्ट, जराही, मुख्तलिफ करके। अगर समझ नहीं आ रही देखें, इस बंदे ने अंग्रेज़ी अपनी इम्प्रूव करने के लिए जो वर्ड नहीं समझ आ रहा था, फेलिसिटी, शादमानी, उसकी ट्रांसलेशंस भी साथ लिखते जाते हैं ताकि उसको आपको फ़ायदा वगैरह भी, सो यू एन्जॉय इट एज़ वेल। इदारा मारफ़ इस्लाम, इसके अंदर रसीद पड़ी है पाकिस्तान 1982 की, पता नहीं किसी ने रसीद बना के रखी हुई है। क्या
इस चंदा माहनामा 165 रुपये, पता नहीं क्या ये लिखा हुआ है। D.H. Lawrence is novelist as well as some poet as well. उसके बारे में क्या लिखा हुआ, let's see. Right. I always say my motto is art for my sake. The words are from a letter written by Lawrence before the war. If I want to write, I write, and if I don't want to, I won't. The difficulty is to find exactly the form one's passion. Work is produced by passion with me. The kisses, is it with you, wants to take. Like, oh, work is produced by passion with me, like kisses. Is it with you, wants to take. Art for my sake, but even though for my sake, still art. Lawrence was always unescapably an artist. Yet, unescapably is the word, for there were moments when he wanted to escape from his destiny. I wish from the bottom of my heart that the fates had not stigmatized me writer. It is a sickening business अपनी writing के बारे में. But against the decree of fate there is no appeal. Nor was it by means all the time that Lawrence wanted to appeal. His complaints were only occasional, and he was provoked to make them not by any hatred of art as such, but by hatred of the pains and humiliations incidental to practicing as an artist. Writing to Edward Garnett, why, he asks, should we be plagued with literature and such like tomfoolery? Why can't we live decent, honorable lives without the critics in the little theater fretting us? The publication of a work of art is always exposure of a nakedness, the throwing of something delicate and sensitive to the asses, apes, and dogs. Mostly, however, Lawrence loved his destiny, loved the art of which he was a master, as who that is a master can fail to do. Besides art, he practiced it as he practiced it, and as the at the bottom, every artist, every most phrasically pure practices it with art for my sake. It was useful for him, pragmatically helpful. One sheds one sickness in books. अच्छा, एक अपना एक्सपीरियंस वगैरह और अपनी जो टेंशन है वो निकालने के लिए. One sheds one's sicknesses in books, repeats and presents again one's emotions to be master of them. आप उसके बारे में लिखते हैं तो आप अपने मास्टर उसको कर लेते हैं. And anyhow, liking or disliking were finally irrelevant in the face of the fact that Lawrence was, in a real sense, possessed by his creative genius. He could not help himself. I am doing a novel, he writes in an earlier letter, a novel of which I have never grasped. Damn its eyes, there I am at page 145. I have no notion what it's about. I hate it. F says it is good, but it's like a novel in a foreign language I don't know very well. I can only make out what it's about. To this strange force within him, to this power that created his work of art, there was nothing to do but submit. Lawrence submitted completely and with reverence. I often think one ought to be able to pray before one works and then leave it to the Lord. Isn't it hard work to come to real grips with one's imagination, throw everything overboard? I always feel as though I stood naked in a fire of Almighty God to go through me, naked for the fire of Almighty God to go through me, and it's rather an awful feeling. One has to be so terribly religious to be an artist. So he thinks the inspiration comes from God. इंटरेस्टिंग. इस तरीके से भी पढ़ने के लिए तो आप काफ़ी पढ़ सकते हैं इसके अंदर करके, बट आइडिया ये है कि पढ़ें, कुछ ना कुछ काम का ये इंटरेस्टिंग मिल जाता है. And that's the fun thing about purchasing books. You like them, maybe you don't like them. Poems of Alfred Lord Tennyson. टेनिसन की सैयद बाकिर हुसैन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की पुरानी किताब है. रिकलेक्शंस ऑफ द अरेबियन नाइट्स, पेज 11 पे देखते हैं टेनिसन ने क्या लिखा हुआ. ये देखो, इनका स्टाइल इतना ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट नहीं करता था, ये बड़ा बड़ा एपिक अंदाज के अंदर लिखा करते थे. और when the breeze of a joyful dawn blew free in the silken sail of infancy, the tide of time flowed back with me, the forward flowing tide of time, and many a sheeny summer's morn. Adown the Tigris I was born, by Baghdad shrines and of fretted gold, high-walled gardens green and old. To Musalman was I and sworn, for it was in golden prime of good Harun al-Rashid. तो अरेबियन नाइट अलिफ लैला की
के अंदर का black the garden bowers and grots slumbered the solemn psalms were ranged above on wood of summer wind a sudden splendor from behind flushed all the leaves with rich golden green and flowing rapidly between the interspaces counterchanged the level lake and the diamond plot of dark and bright a lovely time for it was in the golden prime of good Haruna Rashid सारी की सारी of the good Haruna Rashid पे सारी की सारी verses art कर रहा है. Well, I've not read a lot of Tennyson, so ये किताब है, इसको एग्जामिन करूँगा. A book that I've read time and again or multiple times is, और इसकी फिल्म भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा. निक हॉर्नबी राइट्स अमेजिंगली. अगर आपको म्यूज़िक का शौक है या अगर मॉडर्न म्यूज़िक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में तो नहीं. हाई फिडेलिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स नॉवेल्स आई हैव रेड. छोटे हैं, यंग है, इफ़ यू हैव लव फॉर म्यूज़िक आई कांट रिकमेंड दिस नॉवल मोर. निक हॉर्नबी की हाई फिडेलिटी की फिल्म भी बनी हुई है, क्या नाम है इसका, जॉन क्यूसैक के साथ. वो रियली रियली रिकमेंडेड. मॉडर्न लाइफ के अंदर रिलेशनशिप्स और उनके बारे में. दिस बुक इज़ मोर अबाउट रिलेशनशिप्स दैन द म्यूजिक दैट द गाय रियली रियली लाइक्स. उसके बारे में अपनी वही स्टार्ट्स इज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकअप एंड ही स्टार्ट्स लिस्टिंग हिज गर्लफ्रेंड्स. मुझे भी याद आता फिल्म वगैरह के अंदर. और उसके अंदर I went out with a girl called Kim, who I knew from the fact had already been invaded, and who I am correct in assuming wouldn't object to be invaded again. How high. Penny went out with Chris Thompson from my class, a boy who had more girlfriends than all the rest of us pulled together. I was out on my depth and show, so was she. One morning, maybe 3 weeks after my last grapple with Penny, Thompson came roaring into our form room. "Oi, Fleming, you spastic guest, who I knobbed last night." How high. I felt the room spin around. नॉन शरीफाना भी है इसके. खैर बिल्कुल बच्चों के लेवल के ऊपर नहीं. दिस इज एक्चुअली अ वेरी 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 गुड बुक अबाउट रिलेशनशिप्स. अनदर बुक जो कि यहाँ पे पढ़ी हुई होगी तो हाँ, रिलेशनशिप्स के लिए बचपन के अंदर जो है बच्चों की शायद नहीं है. द सीक्रेट डायरी ऑफ एड्रियन मोल. एक सू टाउनसेंड का ये कैरेक्टर वगैरह था जो 13.5 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ. अब तो इसके अंदर कैपुचिनो येयर्स और भी इसकी आई है. इसका कैरेक्टर ग्रोज अप इन वेरियस डिफरेंट नॉवेल्स एज वेल. My Saturday, May 17th, my grandma made us get up early and go to church with her. My father was made to comb his hair and wear one of his dead father's tie. Grandma held both of our arms and looked proud to be with us. The church service was dead boring. बच्चे की point. The vicar looked like the oldest man alive and spoke in a feeble sort of voice. My father kept standing up when we were supposed to sit down and vice versa. I copied what grandma did. She is always right. My father sang too loudly. Everyone looked at him. I shook the vicar's hand when we were allowed outside. It was like touching dead leaves. उसके हाथ का. After dinner, we listened to my grandma's records of Al Jolson. Then grandma went upstairs for a sleep, and my father and me washed up. My father broke a 41-year-old milk jug. He had to go out for a drink to recover from the shock. I went to see Bert Baxter, but he wasn't in, so I went to see Blossom instead. She was very pleased to see me. It must have been dead boring standing in a field all day long. No wonder she welcomes visitors. So, Bert Baxter, Blossom. और क्या है interesting? Had a lecture on the British Museum from Miss Fossington Gore. She said that it was a fascinating treasure house of personkind's achievement. Nobody listened to the lecture. Everyone was watching the way she felt her body when she got excited. हो है. एज एन ये नॉन शरीफाना इस आई मीन मॉडर्न राइटिंग के अंदर वहाँ पे तो आप बड़े हाई लेवल के ऊपर सारे के सारे जो दूसरे नॉवेल्स हैं उसके अंदर बात वगैरह कर रहे होते हैं. यहाँ पे इंसानी लेवल के ऊपर या बचगाने लेवल के ऊपर या एडोलेसेंट्स के लेवल के ऊपर ये सारी की सारी गुफ्तगू हो रही होती है. पढ़ें, एंजॉय करें. पढ़ेंगे इसी तरीके से अंग्रेज़ी से ठीक होगी. अगर जो दोस्त मेरे से पूछते रहते हैं कि अंग्रेज़ी हम कैसे ठीक करें, या वैसे मज़े के लिए या चस्के के लिए पढ़ें. ओवर वीडियोस और ये जो यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर फ़ायदा ये होता है, वहाँ पे आपको पक्के पक्का ही फास्ट फूड दे रहे होते हैं जिससे आप मोटे होते हैं. ये इस्तेमाल करते हैं. दिमाग इस्तेमाल होता है, आंखें इस्तेमाल होती हैं, दिमाग उसका इमेज बनाने की करता है, आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है, लैंग्वेज वोकेबलरी बढ़ती है. नॉर्मली अगर कोई और आप वीडियो वगैरह देख रहे हो बना बनाया वगैरह, तो आपकी इमेजिनेशन उस चीज़ के ऊपर जो आपके सामने चम्मच के ज़रिए आपको खिलाया जा रहा होता है वो आपकी ही चीज़ चलती रहती है. मगर अगर आप इस एक पढ़ने के लिए अगर आप टेस्ट डेवलप करेंगे, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. चलें अब इसको कहते हैं मेरे ख्याल में घर जाया जाए. वीकेंड है, वीकेंड करने के बाद इंशाल्लाह अगला हफ्ता बहुत भारी आपसे गप वगैरह होती रहेगी. जीते रहे. सलामती.